welcome to Arihant Padhaku. This is Divya Jain from Achievers Institute, Paschim Bihar. So, first of all, thank you so much कि आपने पिछला वीडियो को इतना सपोर्ट करा एंड आई रियली होप कि आपको पिछली वीडियो से आज के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी और आपने पूरा साल अपने इंग्लिश पेपर के लिए बहुत हार्ड वर्क करा है. सो आई थिंक दैट योर स्ट्रगल और योर हार्ड वर्क हैज़ गिवन यू रिजल्ट्स. सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का इंग्लिश पेपर ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब दूर हो जाए. ठीक है. सो वील स्टार्ट ऑफ विद डिस्कशन ऑफ द पेपर ऑफ क्लास 12 इंग्लिश. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ एन अनसीन पैसेज जिसका पहला पार्ट क्वेश्चन था आपके MCQ का. The first green corridor in India was created in Chennai. So the answer is B part, Chennai. Now second part is the organization which is framing a proposal to aircraft cadaver organs is National Organ and Tissue Transplant Organization, which is third part or the third option is the right answer, right? C part I'm sorry, says that the wondrous task the author is talking about in paragraph number 1 is third option, to carry the harvested organ in the shortest possible time. Option is third one, to carry the harvested organ in the shortest possible time. So next question is that most of the people do not go for the heart transplant as it may cause death of the recipient is the right answer. Now this particular MCQ was very tricky as the answer was not exactly given in the passage, but this is the most relevant option I feel. So again we'll move ahead with the next question, which is that most states refer organ transplant cases to big hospitals because. So the option is first one, that they don't have well-trained experts. So this is why they transfer all the major organ transplant to bigger hospitals. So last MCQ given in here was that heart retrieved from a body is alive only for 4 hours. It was very evidently given in the passage. The answer is 4, right? Which is the third option. Okay. So next is your what is green corridor. So the answer of this was given in paragraph number 2. Which says that a green corridor is a route cleared and cordoned off by the traffic police to ensure the smooth and steady transportation of harvested organs. So the green corridor is वो route, right? So you were supposed to highlight this part or write this part very clearly. So the B part says that why is smooth transportation of the retrieved organ necessary? So again answer is in the same paragraph number 2, that the smooth and steady transportation of harvested organs is required as it is a life-saving transplant and the organ might get disformed or distorted. So you were supposed to write this part. C part says that what opinion do you form of Chennai police with regard to the transportation of harvested heart? So again you were supposed to give the words that you feel were relevant or the words that you think should be given to Chennai police. So the words which I feel were relevant were that it was an act of bravery and a very respectable step that they transported the organ so quickly and actually they ended up saving the girl child within 11 minutes. So the D part is that why does the author mean what does the author mean by the few golden hours? So the few golden hours says that organs are alive for 4 to 6 hours. So these are the golden hours, as if the organs are not transported in time, then the recipient would not be able to survive for his life. So which is why the author says that transportation takes the golden hours, right? So E part is that how much does a heart transplant cost a patient in a private hospital? So the answer was given in the last paragraph, that in a private setup a heart transplant cost about 15 to 20 lakhs, which is followed by a post-operative medication of about 30,000 per month lifelong. So this was the exact answer, that 15 to 20 lakh rupees लगेगा और उसके बाद 30,000 rupees every month भी spend करने पढ़ेंगे over medication. So again 1.3 part says that find out the words which mean the same as
the following. So the first word was save. From paragraph number 1, the answer is preserve. Save का है preserve. ठीक है. So B part says that achieved or carry out from paragraph number 3. So the answer was accomplish, right? So if you want to listen this again, तो ये first हमारा question हो गया. Now we'll switch to question number 2, which was of note making. एंड आई एम रियली हैप्पी कि टेलीविजन वाला टॉपिक हम 90% इग्नोर करते हैं और वही टॉपिक आ गया, बिकॉज वी फील बोर्ड एग्जाम्स में इजी टॉपिक आ ही नहीं सकते. सो अगेन क्वेश्चन नंबर 3rd, which is from your section B, is of notice and advertisement, which were again very easy questions. So अगर आपने यहाँ पर format, dates और without any cuttings कराए तो आप यहाँ पर full score कर सकते हो, right? Now question number 4 is of letter writing. So the first part says that you were supposed to write letter to the editor and then a complaint letter, right? So I again hope कि आपने ये वाला बिल्कुल exact language में लिखा है as given in the books. So moving ahead, question number 5 was of speech and debate, right? So topics were again very easy. I feel इस बार 12th बोर्ड बहुत ईजी हुआ है इंग्लिश का, और जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने पहले डिस्कस ना करा हो. ओके, सो लास्ट सेक्शन फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लिटरेचर सेक्शन, जो कि था पूरे 30 मार्क्स का. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7, द RTC, द रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट जो हमारा आया था, ये था हमारा रैट ट्रैप से, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज ही. सो ही गिवन इन द पैसेज इज द पेडलर. पेडलर, रैट ट्रैप और वैगाबॉन्ड, अगर आपने इनमें से कोई भी वर्ड लिखा है तो ये सब वर्ड्स ठीक हैं, राइट? सो बी पार्ट सेज दैट वेयर वाज ही एट दैट मोमेंट. सो ही विच इज द पेडलर वाज इन द फॉरेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आपने फॉरेस्ट वर्ड लिखा है, वुड्स वर्ड लिखा है, तो ये दोनों वर्ड्स ठीक हैं. सो सी पार्ट इज दैट व्हाई डिड ही ले हिज हेड ऑन द ग्राउंड. कि उसने अपना सर जमीन पर क्यों रखा. उसने अपना सर जमीन पर इसीलिए रखा बिकॉज ही वांटेड टू लिसन द वॉइसेस अराउंड, बिकॉज ही हैड नो क्लू एंड ही हैज लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट. तो उसको ये जानना था कि मैं अब आगे कितना दूर जाऊं या फिर मैं मेन रोड से अभी कितना दूर हूं. सो द एग्जैक्ट आंसर इज टू लिसन वॉइसेस. उसने अपना सर नीचे रखा एंड ऑल्सो ही वॉज टायर्ड, राइट? सो 4th पार्ट आपके 7th क्वेश्चन का है दैट डिड ही फील कंफर्टेबल ऑन हियरिंग द थम्पिंग साउंड. व्हाई? सो यस, ही वॉज कंफर्टेबल व्हाइल हियरिंग द थम्पिंग साउंड बिकॉज दैट मेड that gave him the option of developing that courage कि चलो आसपास कुछ है, I can make that effort and go to the iron mill. So he was happy to listen to those sounds because उसको पता लग गया कि now he can survive and go to some place which was very very nearby. So इसका second part, B part is from the poem A Thing of Beauty, right? A Thing of Beauty के poet हैं जॉन कीट्स. अगर आपने लिखा है well and good, नहीं भी लिखा तो भी marks deduct नहीं होंगे. So the first part says that which two things of beauty are mentioned in these lines. So the two beauties mentioned in here are the grandeur of the dooms and the lovely tales that we either hear or read. So why are the lovely tales called an endless fountain, right? So lovely tales को endless fountain क्यों बोला है? क्योंकि वो हमें immense pleasure देती हैं, happiness देती हैं, और tales हमें inspire करती हैं. They give us morals and values. So this was the answer of B part. So 3rd part is that where is this fountain situated? So this fountain is situated in heaven, right? And also if in comparison it is present in the lovely tales or the grandeur of the dooms, right? So 4th part is again explain grandeur of the dooms. So the answer is grandeur of the dooms का मतलब होता है beauty in destruction, that how when something gets destructed, how can we look for beauty in that? And the beauty is that whenever anything destructs or gets ruined, then it is making way for something better or something new in all of our lives. ठीक है? I hope आप अभी तक हमने जितना पेपर डिस्कस करा है वो आपका सारा मैच हो गया, right? So question number 8 was of short question answers, जिसमें आपको कोई भी 5 parts attempt करने थे. So the first question is that how was Sahib's life at the tea stall? So Sahib-e-Alam was not at all happy while working in the tea stall. Why? Because he lost his freedom, he was no longer his own master, and that canister, that milk canister was very heavy for him. So अगर आपने ये 2-3 बातें भी लिखी हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन interviews. So interviews के positive points क्या थे? That it helps us to know the person how they actually are, right? So we come across so many celebrities and we look up to so many people, but that is somehow all fixed. But in an interview हम किसी भी इंसान को अच्छे से जानने में capable हो जाते हैं, right? So ये बात हमें positivity उसकी लिखनी थी. So again, C part says that why is Jancy so critical of Sophie? So Jancy is critical of Sophie because she is very practical and she is not into her fantasy world. She believes in reality and she feels कि जो भी हमारे sources हैं हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए या फिर उतना ही dream करना चाहिए of all what we can achieve, right? So D part says that how do we know that children at the elementary school are coming from a slum? So elementary school पूरी slum के students के ऊपर based है. अभी हमें पता कैसे लगेगा? Because again the school was situated in the slum area. Second, that the girl had her head weighted down and then the boy had those rat eyes. तो ये सब चीज़ें क्या क्या reflect करती हैं कि ये सब बच्चे slum से belong करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा chaotic होता है, बहुत ज़्यादा mess होता है. So all these instances were very very evidently given in the poem. So next question is that how did Zitkalasa feel when her hair was shingled? So she felt like a coward because उसके tribe में having a long hair was a matter of bravery, or that was the custom in her tradition or custom in her tribe. So she felt very bad and she felt very uncomfortable once her hair got shingled, right? So last part is that why did the Tiger King decide to get married? So Tiger King decided to get married when the count of tigers in his kingdom got down. So he wanted to accomplish the aim that he had set, और उसको एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को गलत प्रूफ करना था. और जब उसके अपने टाउन में अपने ही किंगडम में प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स का काउंट कम हुआ, दैट वाज व्हेन हिज मिनिस्टर सजेस्टेड हिम कि उसको एक ऐसी प्रिंसेस से शादी करनी चाहिए जिसके अपने किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स हों. सो फाइनली द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. So how did the swimming instructor build a swimmer out of Douglas? So ये चैप्टर भी हमारा बहुत ब्यूटीफुल था, डीप वाटर. सो जो हमारा इंस्ट्रक्टर था उसने कैसे डगलस को एक स्विमर बनाया. उसने एक पुली से एक रोप अटैच करा था और फिर उसके थ्रू उसने हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल अंडर वाटर डगलस को बहुत बार प्रैक्टिस करवाया था. एंड ऑल्सो ही इम्बाइब्ड दैट कॉन्फिडेंस इन डगलस जिसके थ्रू वो अपना फोबिया, हाइड्रोफोबिया से ओवरकम कर सके. सो ही मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ही गेव दैट पर्सनल अटेंशन एंड ऑल हिज टाइम एंड एनर्जी टू डगलस, जिसकी वजह से वो अपना ये हाइड्रोफोबिया से ओवरकम कर लेता है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज that how did Dr. Sadao resolve the conflict in his mind between his loyal to his country and his duty as a doctor. So again I told my students कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एवरी अदर ईयर जरूर आता है. सो डॉक्टर सदाओ वॉज इन अ डायलेमा, वॉज इन अ फिक्स कि मेरे को अपनी कंट्री के टुवर्ड्स लॉयल होना चाहिए या फिर अपनी ड्यूटी एज अ डॉक्टर निभानी चाहिए. तो उनके बीच में जब ये कॉन्फ्लिक्ट आया तो इसको ओवरकम कैसे करना. ही थॉट ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स एंड ही थॉट कि मुझे अपनी पर्सनल प्रेजुडिस से ऊपर उठकर किसी ऐसे इंसान की हेल्प करनी चाहिए who is almost on the verge of losing his life. So if you have mentioned all these parts and explained it in detail, तो I know आपको 5 to 6 marks कहीं भी नहीं जाएंगे. I hope आपने यहाँ पर लेंथ का ध्यान रखा, अपने वर्ड लिमिट का, अपने सेंटेंस फॉर्मेशन का, एंड स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक्स. अगर आपने ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखा है, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए होंगे, राइट. एंड अबव ऑल इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि इंग्लिश का पेपर अब हो गया है एंड आई होप कि आपका अच्छा पेपर हुआ होगा. सो अब इसके बारे में और कुछ भी डिस्कशन नहीं होगा, राइट. जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम, और आपको नेक्स्ट एग्जाम भी उतना ही अच्छे से करना है जितना आपने इंग्लिश का एग्जाम किया था. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम.